today is our social studies lecture. So, in our previous video, we finished the topic of oceans and we studied about the Arctic and the Southern Ocean as well. So, I hope that you have a good understanding regarding oceans, and we have read in great detail. We have read about the length of the oceans or the total area that is occupied by the oceans on this earth and where these oceans are located in great detail. So I hope that you have developed a good understanding regarding oceans. So today we are going to continue on with our next topic of this chapter, that is seas. Okay, first of all, the definition of sea is given to us. The sea is a smaller body of water closer to the land. Okay, so sea जो है वो basically smaller body है water की that is very close to land. Okay, now see here, Norwegian Sea, Barents Sea, Kara Sea, okay, Mediterranean Sea. See how they are very close to the land. Okay, this is the Red Sea, and this is okay. This is something else. This is the Arabian Sea. Okay, so you can see it's Caspian Sea as well and the Black Sea as well. See, these are seas and they are very close to the land. The water from the rivers, streams, and rain flows into the sea. So, the water that is dumped into the seas, it comes from rivers, it comes from streams, and also the rain as well. The water of the sea and ocean is salty as the deposits of salt in the rocks and land flow out into the sea. So, generally, it's seen. That the water that you find in seas and oceans, it is very salty. The salt content that is present in that water is very high. Okay, now where does this salt come from? It comes from uh, द डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट इन द रॉक, मतलब रॉक्स के अंदर भी जो है, पत्थरों के अंदर भी जो है वो सॉल्ट जो है वो जमी हुई है, डिपॉजिट हुई हुई है, ठीक है। और ये भी है कि लैंड के ऊपर भी जो है वो सॉल्ट पाई जाती है, ठीक है। तो लैंड के ऊपर जो रॉक्स हैं और जो सीज के अंदर जो रॉक्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस सॉल्ट इट गेट्स डिजॉल्व्ड in the sea or the ocean water and it makes it very salty. Okay, the content of salt in the sea is higher as the hot sun evaporates the water into vapor. Okay, so the content of the salt, if we try to gauge it in the sea water, we would find that it's quite high. क्यों? Because आपको पता है जो आपका वाटर साइकिल है, जो बारिश होने का निज़ाम है, उसमें क्या होता है कि द सन शाइन्स ऑन द वाटर, ठीक है, एंड इफ़ इट्स हॉट द वाटर स्लोली स्टार्ट्स टू एवेपोरेट। ओके, सो ये क्या होता है कि सन जो है वो वाटर को इवेपोरेट करता है, तो जैसे जैसे पानी कम होता जाता है तो सॉल्ट का कंटेंट इन द वाटर जो है दैट इज़ टू मच and results in the salt content to increase. Okay, fine. This is what I said, that the salt content in sea is high. The reason of it being high is that when the sun shines on the water evaporates. ठीक है, तो थोड़ा सा पानी जब सी के अंदर कम होता है तो it naturally increases the content of the salt in the sea water. Okay. In colder regions, the salt content is found to be low in the seawater. Okay, this is the opposite. For example, if the region is hot and there's a lot of evaporation going on uh, uh, in the seas that are located in the hotter regions, so you'd find that that water is having a lot of salt content. But इसी के बरक्स the complete opposite of it is found in the colder regions. Here the water is not as much salty as it is in the hotter regions. Okay, okay. Although there are five major oceans, there are many seas in the world. अब फाइव मेजर ओशंस आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सीज आपके बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ दे आर गोइंग टू टेल अस seas that are in different regions. The seas in the Indian Ocean are the Red Sea. अब जो seas जो हैं जो इंडियन ओशन में हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं? एक तो रेड सी है. रेड सी मैंने आपको दिखाया भी था. इट्स लोकेटेड हेयर, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट के दरमियान जो है वो आपका रेड सी है. ओके, द पर्शियन गल्फ, ईरान एंड सऊदीया के दरमियान, दिस इज़ द पर्शियन गल्फ एज वेल. अरेबियन सी इज़ हेयर.
Okay, Java Sea. Java Sea is near Indonesia. Yes, here it is. This is your Java Sea. Okay, Java Sea is near Indonesia. Andaman Sea and many others. So Andaman Sea जो है ये भी आपका I would have to check it, but uh, let me see. It's here somewhere, but I'm unable to find it. So these are the seas that are located in the area of Indian Ocean. ठीक है, रेड सी है आपका, अरेबियन सी है, पर्शियन गल्फ है, जावा सी है, अंडमान सी है और बहुत से और भी. Okay, the seas of the Arctic Ocean are North Sea, Baltic Sea, Norwegian Sea, uh, Barents Sea, Kara Sea, Laptev Sea, East Siberian Sea, and Bering Sea. So here you can see, I'm going to show you a few of the. Okay, अब यहाँ पे जो आर्टिक ओशन है आपको पता है ये सारा नॉर्थ पोल, दिस इज रशिया एंड दिस इज यूरोप, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. ओके, सो नॉर्वेजियन सी यहाँ पर है, बैरेंट सी यहाँ पर है, कारा सी यहाँ पर है. ओके, द सेम ओवर हेयर. आई होप दैट आई मे बी एबल टू शो यू बट इट्स रिटन टू स्मॉल. अब यहाँ पे देख लें आप, बेरिंग सी है, ठीक है, लैप्टफ सी है. सो these seas they are located in the region of Arctic Ocean. Okay, okay, the seas of the Pacific Ocean are the Sea of Japan, Yellow Sea, East China Sea, Coral Sea, South China Sea, Arafura Sea, Sea of Octots, and Philippine Sea. So likewise in Pacific Ocean actually you're going to find Sea of Japan, Yellow Sea, East China Sea, Coral Sea, South China Sea, Arafura Sea, Sea of Okhotsk, and Philippine Sea. Some seas of the Atlantic Ocean are the Caribbean Sea, the Mediterranean Sea, and other small seas such as the Ionian Sea, Aegean Sea, and the Adriatic Sea. So पैसिफिक में आपको ये वाले सीज़ मिलते हैं, ठीक है. इसके बाद अटलांटिक के अंदर भी आपको जो मेजर मेजर मिलते हैं वो एक तो मेडिटेरेनियन सी है और एक कैरिबियन सी है और आयोनियन, एजियन एंड एड्रियाटिक सी. ये भी सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन. ओके, some seas are surrounded by land with small channels of water flowing into the ocean. अब कुछ सीज ऐसे जो कम्प्लीटली जो हैं वो लैंड लैंड ने उनको घेरा हुआ है और उनका वाटर, लेकिन फिर भी क्या होता है कि छोटे छोटे चैनल्स बना के जो है वो ओशंस के अंदर जो है वो गिरता है. मोस्ट ऑफ दिस सीज आर लैंड लॉक्ड. लेकिन ज़्यादातर ये जो सीज हैं ये लैंड लॉक्ड हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हियर, just look at here. Europe, okay, this is Europe, ठीक है, this is Turkey, and these are the like Germany, France, इस तरह की कंट्रीज यहाँ पर हैं. तो ये ब्लैक सी जो है ये बीच में इनके यहाँ पर है, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे कैस्पियन सी है, इट इज़ लोकेटेड नियर कागिस्तान, एंड यहाँ पे आर्मेनिया है. यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज एक्चुअली आपकी हैं रशिया की, ठीक है. सो ये कैस्पियन सी देखें कि सर लैंड लॉक्ड है, इट्स सराउंडेड बाय लैंड. लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे चैनल्स बने होते हैं, जैसा ये ब्लैक सी है उसका चैनल बना हुआ है एंड इट इज़ यू नो इट्स वाटर इज़ फ्लोइंग इनटू द मेडिटेरेनियन सी. तो कुछ ऐसे भी सीज हैं जिनके वाटर जो हैं वो फ्लो करते हैं ओशंस के अंदर भी. मोस्ट ऑफ दिस सीज आर लैंड लॉक्ड. दीज आर कैस्पियन सी, एरल सी एंड ब्लैक सी इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप. तो ये बेसिकली लैंड लॉक्ड सीज हैं, लेकिन इनका पानी जो है वो फिर भी फ्लो करता है into the sea and into the oceans, Caspian Sea, Aral Sea, and Black Sea. And they are located in the Central Asia, Russia, and Europe. Okay. The salt content in the Dead Sea is so high. Now there's a Dead Sea as well. Okay. The salt content of the Dead Sea is so high that plants and marine life cannot survive in its water. This is why it is called Dead Sea. The water allows all things to float on its surface. Therefore, no one can drown in this water. So this actually, uh, this Dead Sea. So Dead Sea is located in the region of Israel and Jordan. Okay,
The salt content in the Dead Sea is very high, and plants and other marine का मतलब होता है water, ठीक है? तो water life जितनी भी है वो इस पानी के अंदर survive नहीं कर सकती. For example, no fish can survive in this water. Okay, this is why it is called the Dead Sea. That is why this is the reason why they call it the Dead Sea, because things are unable to survive in its water. Okay, no plants can survive, no marine life can survive. The water allows all things to float on its surface. So what happens is that if anything is thrown in the water, that thing, it surfaces onto the surface of the water. Okay, तो कोई चीज़ भी जो है वो ड्राउन नहीं कर सकती यहाँ पे. देयरफॉर नो वन कैन ड्राउन इन दिस सी. इसलिए कोई इंसान खुदा ना खास्ता गिर के डूब जाए यहाँ पे, तो वो जो है इस पे आप ये कह दें कि पहली बात तो वो डूब नहीं सकता. वाई? बिकॉज ही गॉट टू द सरफेस. बिकॉज द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो ड्राउन नहीं करती, डूबती नहीं, बल्कि वो सरफेस पे आती हैं. So inshallah would be this is the end of our chapter, and we have read it completely, and I'm going to send you question number 4 uh, of this chapter. So do go through the entire video and do copy down the last question answer. Thank you.